Have you ever been the victim of water supply's time uncertainty and have spent time waiting for the water tank to fill up so you can close the motor before it overflows? If yes, you are one of the unfortunate ones like most people in Karachi and other areas of Pakistan. The CEO, Mr. Ansab, who we chose for our interview, went through the same hassle, but unlike any of us, he spent his years studying electrical engineering, and in the last 2 years before his graduation from Fast University, he solely developed what we know today as the level indicator, which is one of the first products of Asani.io. In 2017, Asani.io came to life so it could provide Asani in her life. But we wanted to know a little more about Mr. Ansab and how his childhood and environment helped him accomplish what he has today. According to Mr. Ansab, he was from your typical middle class or upper middle class background, and like any other kid, he was not keen in studying. But one thing that he said struck us, it was that entrepreneurs not only have the motivation but also have a drive which allows them to take the first step. Here is Mr. Ansab talking about his first venture. I used to sell like cake. मैं 5th 6th क्लास में अंडे बेचता था। जो देसी अंडे होते ना, हमारे घर में बहुत सारी मुर्गियाँ थी, तो अंडे कोई नहीं खाता था, ये देसी अंडे हैं, मैं उठा के बेचता था। तो वहाँ से उसके रेट लगवाना, वो एक पूरा एक वो था कि अगर कोई नहीं खा रहा, फिर वैसे ही स्टार्ट होने जमा किए। वो 4th and 5th स्टैंडर्ड में अगर मैं ये काम कर रहा था तो मेरा एक माइंडसेट वैसे ही बना हुआ था। फिर उसके बाद बाकी वेंचर्स छोटे छोटे स्टार्ट करना के He also mentioned that having the support of his parents and not having any additional responsibilities gave him the strength and time to fully devote himself to Asani.io. Definitely we have like 6 mentors जो कि हमें टेक साइड पे, बिजनेस साइड पे, मार्केटिंग, कंटेंट, स्ट्रेटजी, इवन की बिजनेस, उस सब में हेल्प आउट करते हैं। और जो उनसे कनेक्ट करने का तरीका ये था कि वी वर एट दैट स्टेज कि जहाँ पे हम उनको सही वैल्यू प्रोजेक्ट कर सकें, कि जाके हम अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था कि वी हैड अ प्रोडक्ट लाइन। फिर उसके बाद ऑनवर्ड करना इजी रहता है कि जाके अगर आप रैंडम किसी बंदे से बातें शुरू कर दोगे ना, हो यार अपना काम तो पूरा करना। तो वो जो माइंडसेट था ना कि भाई अपना काम पूरा कर लिया, नाउ आई नीड दिस मच ऑफ हेल्प, और किस से हेल्प चाहिए और उसको जाके क्या बात बतानी है। तब वो मेरे पास like I started from LinkedIn, Facebook, startup groups। कराची मुझे कोई नहीं जानता, तो वहाँ से इंडस्ट्री का बैकग्राउंड तो था, इंडस्ट्री के लोग बहुत जानते थे कि सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मोबाइल सिस्टम्स की इंडस्ट्री, वहाँ पे लोग जानते थे, लेकिन उनका स्टार्टअप वर्ल्ड से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, क्योंकि इट्स अ क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। तो उस टाइप के मेंटर्स कम्युनिकेशन के थ्रू के राइट वैल्यू प्रोजेक्ट करना और उनको बताना कि यार दिस इज समथिंग कि जिसमें ये बंदा बिलीव करता है और इसको मेंटोर करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा करेगा। तो दिस वाज अ की पॉइंट। तो ये की पॉइंट था। बाकी हमारे पास 6 मेंटोर्स हैं जो कि हमें लाइक वीकली बेसिस पे कनेक्ट करते हैं इन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, बिजनेस ओवरऑल की सब चीज़ें हम उनको फिर रिपोर्ट करते हैं कि किस किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। Furthermore, Mr. Ansab also mentioned that before Asani.io was established, he worked for a few startups to learn the ropes of how things work.
This is where he acquired experience of talking to people and the art of persuasion. मैं इस प्रोडक्ट को जो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक फुली जो एक पैकेज प्रोडक्ट था, इस वेंचर को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास था, जो कि स्पेसिफिकली कराची में इंस्टॉल जो अभी भी हम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। तो आई वेंट टू अ स्टार्टअप और एक कंपनी, डिफरेंट कंपनीज के पास में गया कि भाई पार्टनर करते हैं और मिलके काम करते हैं और आप इसकी मार्केटिंग करें और इसको एक्सपेंड करें, लेकिन आई विल बी द प्रोडक्ट ओनर। तो वहाँ से मुझे जो स्टार्टअप्स या बड़े ग्रुप्स भी थे, दे वर लाइक कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें इतनी का पैकेज ऑफर करते हैं, जो कि बहुत कोई 10 साल एक्सपीरियंस बंदे को भी ऑफर नहीं करता। तो लाइक यार इससे अच्छा बंदा खुद ही स्टार्ट कर ले, कि अगर कोई इस लेवल पे जाके सिर्फ प्रोडक्ट को ऑन करने के लिए इतना ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ से मुझे रिस्पांस ये मिला कि प्रोडक्ट की वर्थ तो है और सिर्फ एक प्रोडक्ट था। ऑन द गो हमने कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स Also emphasized that he identified the need in the market of talking to numerous people and then also circulating forms. He would go up to the people and ask them about their water management issues. For him, primary research wasn't enough. He also conducted extensive secondary researches and looked up similar products in different countries. According to him, for a startup, hiding the cost of everything is essential. He conducted a thorough feasibility analysis and with his family funding his research, he decided to go for Asani.io. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको, क्योंकि इट्स अ कैरियर ओरिएंटेशन पूरी की पूरी, कि आई हैड टू लेफ्ट माय जॉब और उसके बाद मुझे मतलब जॉब क्विट की, और वो एक काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है कि जो जॉब क्विट और हाईली पेइंग जॉब क्विट करने के बाद, तो ऑब्वियसली उसमें सारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मार्केट की रिसर्च, टैम्स एंड उसके ऊपर हमने वर्किंग की थी कि कितनी बड़ी मार्केट है, किस मार्केट को, किस सेगमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी हद तक डिटेल्ड हमारी मार्केट रिसर्च थी। Mr. Ansab worked 10 hours per day and has introduced 3 products. How much capital did it take to raise? Today we have raised quite a million. And how long did it take to reach a positive cash flow and for you to reach your break-even stage? Right now, we are on a more than a traction phase, लेकिन revenue हमारा है, and we are projecting like break even in next 3 months. To law and getting help from the experts, he told us that all you need to do is know what you're talking about. Before contacting an expert, ask yourself, why should they help you? Do your research and write 1 paragraph, which would be enough for him to be convinced. We also inquired about Mr. Ansab's toughest moment and the sweet rewards he accomplished. And this is what he had to say. जब एक कस्टमर आगे आपको कहते हैं ना कि यार मेरी ख्वारी खत्म हो गई, अब मैं रात को 2 बजे उठ के ना पानी नहीं भर रहा होता, या इवन कि मेरा एक कस्टमर था, ये काफ़ी एक हार्ट टचिंग मेरे लिए स्टोरी है, कि एक कस्टमर था जो कि मुअज्जिन था, मस्जिद में हमने लगाया, तो उसके जो जहाँ पे वो रहता था उसके बच्चे भी ज़मीन पे सोते थे और वहीं पे टैंक था, तो कभी ऑन करके सो जाता था, तो महीने में 1 आध महीने में ऐसा होता था कि पानी ओवरफ्लो कर जाता था, और वो उसके रात को 2 बजे बच्चे वो सारा उसके बिस्तर वगैरह गीले हो जाते थे। तो मुझे एक पेन था, वो सॉल्व करना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम किसी के सॉल्व करना था, वैसे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास भरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक
इनिशियल टेस्टिमोनियल्स में से था कि यार मेरा ये मसला था, आपने सॉल्व किया। फिर वो वही बंदा पूरा दिन 5 टाइम पे मौजन भी है और अजान देना और मस्जिद के मामला को देखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। अब वो रात को वो काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना एक हमारे लिए जो फीडबैक था ना कि यार हमने कुछ ऐसे क्रिएट किया जिससे लोगों को आसानी हो। तो एक ये था। दूसरा जो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वगैरह हैं हमारे पास। दूसरा ये था कि एट टाइम्स जब कोविड आया तो काफ़ी टफ टाइम था हमारा। तो यू नो कि I was all alone in our back office, जो हमारा प्रोडक्शन ऑफिस है। तो वो टाइम को कन्वर्ट करना और सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि we were at प्री रेवेन्यू स्टेज। we had a lot of leads जो कि कन्वर्ट होने वाली थी, कि हमारी 100-150 लीड्स कन्वर्ट होने वाली थी और कोविड हैपन। जो इतनी ज़्यादा तकरीबन हमारी सेल्स की और ऑपरेशन की एफर्ट्स थी वो सारी घर चली गई। हमारे इतने बड़े क्लाइंट्स थे स्कूल्स के या डिफरेंट, वो सारे लोग। तो वो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था जिसको फिर हमने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, प्रोडक्ट लाइन को मैच्योर करने में और ज़्यादा फोकस किया। The business model Canva for Asani.io, which basically highlights. Lastly, we wanted to know the risks and challenges he had to face. And he said that the pandemic definitely took a toll on their business, as most of their leads were wasted because of lockdown. But they took this opportunity to focus on their brand and its presence. Strengths जो हमारी हैं, we have a highly passionate team that believes in our mission of creating and developing that product line or services that connects to our brand name आसानी। कि सारी टीम वैसी है जो कि पैशनेट है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट लाइन डेवलप करने के लिए, जो कि आसानी ब्रांड का एक कोर मिशन है कि ऐसे लोगों को आसानी होती है, फेदर बेडिंग सॉल्यूशंस हो, लो फॉर नो, essential automation या essential चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। First thing is team. Second positive thing is like we are experienced and certified to be able to solve this huge water scarcity problem. तो ये हमारी positive points हैं। Negative points like हम कह सकते हैं कि हम अपनी उस स्पेस के ऊपर, मार्केट अवेयरनेस के ऊपर हम काम कोविड की वजह से नहीं कर सकते कि जो हमारा गोल था ये हमारा अभी तक का नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन उसको भी हमने काफ़ी हद तक ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू सॉल्व। The journey of Asani.io and how Mr. Ansab started his own venture.